everyone, welcome to Apti Plus, the Academy for Civil Services. Today we are here to discuss the UPSC weekly current affairs, and that is we will cover from 8th to 15th of March 2025. Before starting this session, I would like to make one announcement that Apti Plus is starting with a new initiative wherein we will be covering the past 10 years question of UPSC prelims. So we are starting this new series on PYQ, and this series will provide you insights into the themes on which UPSC is asking question in recent times, as well as it will help you to gain the confidence in your preparations and with the more focused strategy. So definitely you should see this series, and we will be starting this series from this week only. So moving on after this announcement, let's start our session on weekly current affairs. Herein we will be covering the discussion in the format of MCQs and one mains question based on the editorials published in the Hindu or your economic times. Then we are doing the discussion. Now moving on to our first question. Question number 1. Consider the following statements about Organization of Islamic Cooperation. So this was in news, and along with it, Arab League was also in news with respect to Donald Trump's decision on seizing the Gaza and relocating the residents of Gaza Strip, the West Asian region, consistently in news. Now, statement 1 Number 1 is OIC is the largest international organization after United Nations, representing the collective voice of Muslim world. This is correct. OIC is second largest organization after United Nations, representing the Muslim world. It was established on 25th September in 1969 following the arson attack on Al-Aqsa Mosque. OIC's permanent secretariat is located in Cairo. This is incorrect statement. It is located in Jeddah, Saudi Arabia. The primary objective is to safeguard and protect the interest of Muslim world while promoting the international peace and harmony. So your statement 1, 2, and 4 are correct. You can have a look on the explanation part. Its secretariat is located in Jeddah, Saudi Arab, and Cairo has become host for many Arab League's meeting, but permanent OIC's headquarters is in Jeddah. So our next question. Consider the following statement regarding Gandhi or Astra Mk3 missile. Recently, DRDO has successfully tried this missile, and it has said that air-to-air missile technology will be called Gandhi. Gandhi एक आपका महाभारत में भी शस्त्र था जो हवा से हवा में जो अटैक होते हैं मिसाइल्स के उनको कवर करते हैं. So let's see the statements here. Astra Mk3 is next iteration in the Astra series following the successful development of Astra Mk1 and Mk2. This statement is correct. It is powered by solid fuel ducted ramjet propulsion system, which uses atmospheric oxygen as an oxidizer. This statement is also correct. जितने भी आपके रामजेट इंजन होते हैं वो जो ऑक्सीजन लेते हैं जो मिसाइल को प्रोपेल करने के लिए अपवर्ड और एक्स्ट्रा पुश देने के लिए अपवर्ड जरूरी होता है, वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं रादर देन कैरिंग द ऑक्सीजन सिलेंडर इन द मिसाइल इटसेल्फ, बिकॉज वो आपकी मिसाइल का वेट भी बढ़ाता है. सो इट्स बेटर टू टेक एडवांटेज ऑफ द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजर. ऑक्सीडाइजर क्या होता है मिसाइल में? जो मिसाइल का फ्यूल होता है उसको बर्न करने के काम आता है. Astra Mk3 is capable of sustaining hypersonic speeds of Mach 6 over a range of 500 to 550 kilometers. This statement is wrong because it sustains speed up to Mach 4.5, not Mach 6, and it has range of around 330 kilometers. So आपको ऐसे पैरामीटर्स रेंज पे ध्यान रखना चाहिए बिकॉज यूपीएससी आजकल फैक्ट्स पे भी क्वेश्चन बना रहे हैं. It is designed primarily for use in air-to-air combat scenario. Yes, it does air-to-air combat scenario, but it is also designed for surface-to-air combat scenario also. So your answer will be 1 and 2. 3 and 4 are incorrect. You can see the
DRDO has officially designated its air-to-air missile technology as Gandhi. So आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि यूपीएससी में कोई क्वेश्चन that what is Gandhi related to? It's a defense technology for air-to-air missile technology. Okay, and you can see its range, its speed is supersonic, not hypersonic, up to 4.5 Mach. एंड किलोमीटर्स में रेंज कितनी है? 300 से 350 किलोमीटर्स तक ये मिसाइल जा सकती है. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सरफेस टू एयर एप्लीकेशंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements are correct regarding flora of Madhav National Park? Recently, Madhav National Park has been designated as 58th Tiger Reserve in India. So this was very much in news, and this park is located in your Central Highland region of Madhya Pradesh. So let's see what is the flora of this national park. The flora of park primarily consists of tropical dry deciduous forest. दिस इज करेक्ट बिकॉज जो माधव नेशनल पार्क है वो विंध्या रेंज के थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड और ड्राई रीजन में रहता है. करधाई इज द डोमिनेंट ट्री स्पीशीज फाउंड इन दिस पार्क. Park also has subtropical wet forest due to its geographical location. No, it is incorrect. It lies in drier regions of the Central Highlands. Dry thorn forest are found in the patchwork across the park. This also is a correct statement. Answer is C, 1, 2, and 4. You can see that MP, Madhav National Park has become 58th Tiger Reserve. And other tiger reserves, it is the 9th Tiger Reserve from MP. This you should also know. अब MP में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हो गए हैं. बाकी कौन से हैं आपके? रातापानी, वीरांगना, दुर्गावती, संजय डुबरी, सतपुरा, पन्ना, बांधवगढ़ एंड पेंच. तो माधव नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ है? इट इज इन चंबल रीजन एंड नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड रीजन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अपर विंध्या रेंज. विंध्या हिल्स के ऊपर की साइड लोकेटेड है. ओके, एंड इट वाज नोटिफाइड एज नेशनल पार्क इन 1958. which all lakes are found here? Sakhya Sagar, Madhav Sagar, and fauna, that is animals found are Nilgai, Chingara, Chosinga, Chital, barking dog, marsh crocodile, leopard, jackal, python, etc. Trees we have seen, it's dry deciduous, dry thorn, and Kardhai is the dominant tree species found here, and it do not have any subtropical wet forest. So ये आपको कई बार डिस्क्रिप्शन दे देते हैं किसी पार्क की, एंड देन दे विल आस्क यू टू रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द ऑप्शंस. सो दैट इज व्हाई this description is necessary. Now, since it's an important topic, tiger reserves, national parks, with respect to environment section, so we should also be aware of this, how tiger reserves are declared. They are notified by the state governments. As per the under which act they are notified? Under section 38(5) of Wildlife Protection Act 1972. and इसको रिकमेंडेशन कौन देता है बनाने की? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्विंग अथॉरिटी. तो कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले स्टेट कोई अपना प्रपोजल पुटअप करता है, फिर वो प्रपोजल जाता है आपका NTCA के पास. NTCA उसकी स्क्रूटनी करेगी and उसको then NTCA recommend करेगी to the state, yes you can declare it, and then finally state government declares that area as a tiger reserve. तो NTCA का approval चाहिए होता है. What now we should also know something about tiger. So tiger को जो scientific name है that is your Panthera tigris, and it is found in all types of largely all types of faunal regions: tropical forest, green, evergreen forest, woodland, mangrove, grassland, savanna, and largest of the all Asian big cats. And they rely more on the sight than the sound, and sight and sound rather than smell or hunting. तो उनकी आंखें और उनकी कान बहुत तेज होते हैं, और ये अकेले रहना पसंद करते हैं, सॉलिटरी, स्पेशली अवे फ्रॉम द मदर एंड द ऑफस्प्रिंग. टाइगर्स जो होते हैं, एंड ये नॉक्टर्नल होते हैं. नॉक्टर्नल मींस रात को जगने वाले, एंड दे आर द एम्बुश प्रेडेटर्स, छुप के वार करने वाले. दे आर गुड स्विमर्स as well as their conservation status is endangered. They are not critically endangered, they are
endangered and comes under Schedule 1 of Wildlife Protection Act, where maximum protection is given to them and you cannot hunt them. And Appendix 1 of the CITES Convention. So, highly protected species. Moving on, consider the following statement regarding IPCC. IPCC recently has started its process of publishing the seventh report. And so here's a question on IPC. It's an intergovernmental international organization established in 1988 by WMO and UNEP. This is correct. Main objective is to provide policymaker with the assessment of the scientific basis of climate change, impact, risk, options for adaptation and mitigation. This is also correct. It has 195 member, including India, and works under the direct guidance of UN General Assembly. No, this is incorrect. It is a specialized body, but does not work under UNG. उसकी specialized body directly उसके under नहीं आती है. IPCC does not engage in direct research, but assess the latest scientific data and publication on the climate research, climate change. So ये अपना कोई अलग से रिसर्च नहीं करती है. रादर जितने भी established papers हैं climate change पे उनका रिजल्ट देख के अपना फाइनल रिपोर्ट पब्लिश करती है. सो आंसर विल बी 1, 2 and 4. So it has started its work on the 7th cycle and it operates under the sponsorship of WMO and UNEP, but not directly managed by UNGA. Moving on, with respect to insider trading and its regulation, consider the following statement. First is insider trading refers to act of trading securities based on unpublished price sensitive information. UPSI, typically held by senior management or company officials. This is correct. तो insider trading क्या होती है आपकी? किसी के पास कोई कंपनी का सीक्रेट होता है that can manipulate its shares and its values. So अगर कोई उससे undue advantage due to that information लेना चाहे तो वो that is called insider trading. So there is a next statement, prohibition of insider trading regulation 2015. So ऐसी कोई trading ना हो उस पे regulations थे. Now these were recently amended in 2024, allowing insiders to trade security freely without any restrictions or obligations. तो ऐसा तो बिल्कुल allow नहीं होगा. आपको इतना extreme statement है तो this is incorrect. Because एकदम से insider trading पे थोड़े से अलाउ किया गया है बहुत थोड़े सेक्टर में, बट नॉट कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. नेक्स्ट इज अंडर पीआईटी रेगुलेशन, insiders must specify a trading plan that includes detail like share price, amount, transaction type, and they are provided with the narrow window for executing trades to prevent the misuse of UPSI. So this statement with respect to PIT regulation, तो उनको कोई अगर इंसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, एक तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, और अगर कोई कर भी रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि हम किस बेसिस पे क्या क्या ट्रेडिंग प्लान है हमारा, कैसे अमाउंट का इंफॉर्मेशन है, कितना है. सो बहुत नैरो स्कोप दिया है टू अलाउ recently in 2024 to allow for the insider trading. Next statement, insider trading regulations are primarily enforced by RBI to ensure transparency, fairness in the security market. This is totally wrong because security in the capital markets is regulated by your SEBI, not RBI. So answer will be 1 and 3. So you can see here, recently SEBI has issued some warning to Nestle India for violating these insider trading regulations. तो आप ये देख सकते हैं. You can read this. Moving on, epigenome editing refers to. Answer is the process of changing epigenetic marks on the genome to regulate gene expression without altering the DNA sequence. So it's a genetic engineering technique, epigenome editing, wherein जो अभी तक हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की डीएनए पे ऑल्टरेशन करने की टेक्निक अप्लाई कर रहे थे, उसमें हम क्या करते थे, डीएनए का सर्टेन सेक्शन को कट करते थे एंड उससे क्या होता था, डीएनए सीक्वेंस चेंज होता था एंड देन वी अप्लाई इट ऑन द फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीजेस लाइक कैंसर. बट अब क्या एक नया इनोवेशन है, इसको बोल रहे हैं हम एपिजीनोमिक एडिटिंग. इसमें आपको केमिकल से थोड़ा सा जीनोम पे मार्क करने की जरूरत है एंड आपका जीनोम का एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं. उसके लिए हमें डीएनए में चेंज लाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है. तो रिसेंटली दिस टर्म इज इन न्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज एपिजीनोम एडिटिंग? तो सिंपली आपसे पूछ सकते हैं
It's a milder version of gene editing. It's a genetic engineering technology that adjusts gene transcription through modifying epigenome, directly targeting the root of the dysregulation while leaving the primary डीएनए इंटैक्ट. तो प्राइमरी डीएनए आपका इंटैक्ट रहता है और जो जहां पे इशू है उसको केमिकल से कंपाउंड से को मॉडिफिकेशन कर देते हैं जीन में एंड वो ठीक हो जाता है जो भी इशू होता है एपिजीनोम में. ठीक है, दिस यू कैन रीड. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पर्पस ऑफ कील कैनाल. कील कैनाल है मैप में आपका, अभी रिसेंटली एक ब्लास्ट हुआ है नॉर्दर्न सी की साइड, तो उस वजह से ये कैनाल भी न्यूज में रही है. तो इट इज अ कैनाल टू कनेक्ट नॉर्थ सी विद द बाल्टिक सी फॉर फास्टर मैरीटाइम ट्रेड. So let us see its location. A tanker carrying US military equipments collided with a cargo ship and caught fire in the North Sea of the Britain. So that's why this was a news, this area. So where it is located, let's see the map. So here you can see North Sea and here we have Baltic Sea. So through this canal, this red dash 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 line across the northern side of Germany is your Kiel canal. तो बाल्टिक सी से नॉर्थ सी को आपको कनेक्ट करती है. आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. इट्स अ शैलो. नॉर्थ सी क्या है? शैलो एंड क्लोज सी, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में है. And it is one of the world's, Kiel Canal is one of the world's busiest artificial waterway. It's a artificial waterway, not natural, connecting North Sea with the Baltic Sea, bordering countries. And rivers कौन-कौन सी इसमें drain out होती हैं? Your Elbe, Weser, Rhine, Thames. Thames River also drain out in this canal. And major ports are Hamburg and Rotterdam. And Brent crude is type of North Sea oil that used as a global ऑयल प्राइस बेंचमार्क. तो जो यहाँ पे नॉर्थ सी में जो तेल मिलता है उसको हम ब्रेंट क्रूड कहते हैं. ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the main objective of 75-25 initiative? So it provides the standardized care to 75 million people living with hypertension and diabetes by 25 December. So this is India's initiative to eradicate diabetes, that is a non-communicable disease, among its population and provide them due care under by December 2025. ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव है और इसमें अभी बताया गया है दैट इंडिया हैज अचीव्ड 89.7% ऑफ इट्स टारगेट फॉर प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन टू 48 मिलियन इंडिविजुअल एंड डायबिटीज में 25 मिलियन को हमने ये दिया था. तो ये लॉन्च कब हुआ था? हाइपरटेंशन डे पे हमने लॉन्च किया था. एंड दिस इज द योर एम टू प्रोवाइड द केयर to 75 million people by December 2025 through primary health centers पे. Moving on to our mains editorial perspective question. Here it is given that UN's effectiveness in conflict resolution and peacekeeping. Consistently, there are a lot of deaths, civilian deaths going on due to some wars going currently, that is in Russia, Ukraine, and especially the chaos in West Asian region, especially Israel and Gaza, Israel Hamas issues going on. तो यूएन की इफेक्टिवनेस पे एक क्वेश्चन आया है. तो पीस कीपिंग से रिलेटेड GS2 में कुछ भी आएगा, इससे बाहर नहीं. आप इसमें ऑल पैक्ड विद फैक्ट्स यूएन के पीस कीपिंग से रिलेटेड. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So सबसे पहले we will define कि what is the meaning of UN peacekeeping. So it refers to activity carried out by UN to help maintain, restore international peace and security in the conflict affected area. तो peacekeeping क्या होती है? आपके UN की अपनी एक फोर्स होती है, ठीक है, जिसको UNSC सैंक्शन करता है, दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स में वर्ल्ड के जाके वहां पे पीस रिस्टोर करना उनका टारगेट होता है. It was established to respond to the conflicts and support countries to transition from conflict zone to peace zone. Okay, and it operates under the principle of consent. उसमें उस देश का कंसेंट होगा, इम्पार्शलिटी से वर्क करेगी जो फोर्स है, and they will not use force except in self defense and defense of the mandate. तो सेल्फ डिफेंस में ही फोर्स यूज करना अलाउड होता है.
And the first peacekeeping mission was launched in 1948 when UN Security Council authorized the deployment of military observer to the Middle East. तो पहला ऑपरेशन कहाँ हुआ था? मिडल ईस्ट में हुआ था. और इसको ऑथराइज कौन करता है? आपका सिक्योरिटी काउंसिल. तो इस तरह से आप यूएन पीस कीपिंग के बारे में 4-5 पॉइंट बताएंगे. देन लीगल फ्रेमवर्क कहाँ से मिलती है? पावर्स टू सेंड फोर्सेस इन द फॉरेन कंट्रीज फॉर योर पीस. तो ये आपका यूएन चार्टर के चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 में लिखा हुआ है. यूज ऑफ फोर्स फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी and regional peace enforcement, peaceful settlement of disputes. And here member states must contribute forces. कौन देश ये forces लाते हैं? अपने जो सारे देशों से military force जाती है. इंडिया से भी बहुत सारे peacekeepers जाते हैं. India is one of the country to send the largest troops under the UN peacekeeping initiative. What are the achievements till date? तो आप ये लिख सकते हैं अचीवमेंट्स. इट्स इफेक्टिवनेस को अगर एनालाइज करने के लिए आया तो आप लिखेंगे बहुत अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, स्पेशली इन कंबोडिया, एल सल्वाडोर, मोजाम्बिक, सियरा लेनी, है ना. इन and these operations, these conflicts have reduced by 40% since 1945. It has also provided, peacekeeping missions have also provided aid, humanitarian aid to this conflict zones across the world, and they have supported the refugees and their resettlement. They have also supported the countries to gain back their democracy by conducting peaceful democratic elections. So these achievements you can write down. And but its effectiveness is a major concern in the world right now because of the large scale failure recently. एक तो रशिया वॉर है, देन देर इज इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन. ये तो करंट वॉर्स चल रहे हैं. इससे पहले भी देर वॉज अ रवांडा जीनोसाइड दैट हेल्ड इन 1994 वेयर 1 million Tutsi civilians were slaughtered in 100 days, and UN could not do anything despite, because it was not authorized for its deployment due to the veto power politics. Okay. And then again in 1995 there was a Srebrenica massacre in Bosnia. Despite declaration of this region as a safe zone, there was a massacre of Bosniak Muslim. So these were the big blot on the achievement or the past of this UNSC's peacekeeping force. What are the reasons? So you should be knowing why this peacekeeping force of United Nations has not been able to perform its role. Reason is power politics continuously. Countries like US and Russia, who have the power to authorize the United Nations Security Council to effectively deploy your UN peacekeeping forces in the conflict prone region, are constantly involved in the veto power politics, where if one state authorizes the action, the other power will veto it. Another issue is resource constraint and funding challenges. So this is a huge issue. Especially major powers are reluctant to increase the funding, and there is understaffing in the mission sent. Especially you can see in Lebanon, the UN peacekeeping forces are acting with limited resource despite the increased tension. तो पैसा नहीं मिलेगा तो काम तो नहीं होगा. Changing nature of conflicts now is other than state actors, non-state actors, cyber conflicts, new technologies are continuously, urban warfares are the new face of the conflicts, and UN peacekeeping force are not updated to manage those types of conflicts. Again, there is an issue of sovereignty concern, host state resistance. For example, host state जहाँ पे आपको ये peacekeeping deploy करनी है, the people are showing resistance. Plus, there is some credibility and past failure, which has again raised skepticism again in the population of the region. New regional alternatives are also evolving, which are able to present better peace in the regions. Another thing is technology capability gap and lack of political will for reform. And the UNSC reform and UN peacekeeping reform, since the publication of this 2015 Hippo report recommendations, has not been fulfilled, and UN itself has not undertaken in its Security Council structure. So what can be the way forward?
India ka contribution you can read, and then way forward, what you will write? You will write that the P5 countries should be expanded to P7, more representation to the southern world like India, South Africa. We should engage in majority based voting system rather than one nation veto blocks decision making. We should also start with the emergency mechanism that can override the vetoes in case of सिवियर, बहुत ज्यादा कहीं मार काट हो रहा है, जैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रही है, तो ऐसे में आपको वीटो से ऊपर उठ के कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बनानी चाहिए, एंड पीस कीपिंग फोर्सेस को ज्यादा जल्दी जल्दी एक्टिवली डिप्लॉय करना चाहिए, एंड मेक श्योर दैट सिविलियन प्रोटेक्शन के लिए जो मैंडेट होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनको पावर दी जाए कि सिविलियन जहां भी डेथ हो रहा है वहां पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स कैन प्रिवेंट द ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। बट मेजर जो आपका रिकमेंडेशन रहेगा वो यही है कि यूएनएससी के रिफॉर्म्स बनाए जाएं और उसको मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, सो दैट एक कंट्री दूसरे कंट्री को कंटिन्यूअसली ब्लॉक नहीं करे, एंड फंड एलोकेशन, and then you can see better standard training centers, gender mainstreaming and inclusion of females in the peacekeeping for targeted strategies, more PPP partnerships can be deployed, then dedicated peacekeeping reserve fund can be created for better financial management. So this was all in any of the 5 or 6 you can remember the initiatives or reforms that can be taken. So this was all in today's discussion. Thank you very much.